हाँ भैया। वेलकम 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 अगेन। जोरो कह रहा आज वर्ल्ड एंड होने वाला है कि एक दिन में दो दो स्ट्रीम। भाई अभी यार शाम को ही आने वाला था इसका अपडेट, तो मैंने कहा भाई अपडेट आ रहा है तो ज़रा अपडेट के साथ साथ चला जाए। हाँ जी, तो हम भी आ गए अपडेट देखने के लिए। वेलकम वेलकम नॉट मॉड डबलिन भाई सुजीन। ये मेरे कल कैसे बताया होता भाई, अब क्या कहते हैं, ये चल रही है ना। 17 मिनट है इसके अंदर अभी। 16 मिनट, 16 मिनट बाद स्टार्ट होगी, तो हमने कहा भाई देख ही लें एक बार ज़रा कि क्या हाल चाल है। 4.6 में क्या आने वाला है। बाय द वे जो डेवलपर इनकी जो डिस्कशन थी ना गेंशिन वाली, मैंने उसका थोड़ा बहुत पढ़ा। उसमें एक चीज़ मुझे बहुत सही लगी, और वो चीज़ पता है कैसे क्या थी। वो चीज़ थी कि जो लोग जिन लोगों की एक्सप्लोरेशन बाकी है और जिन लोगों के पास यूट्यूब पर भी है, क्या यूट्यूब पे भी है ना, ये 16 मिनट में स्टार्ट होगी। तो बेसिकली मैं अपना चेहरा थोड़ा बड़ा कर लूँ या फिर चलने देते हैं इसको ऐसे ही। हाँ, तो वो क्या है कि जो लोग एक्सप्लोरेशन करते हैं, चेस्ट हंटिंग कर रहे हैं स्पेसिफिकली, और जिनके पास वो चेस्ट कंपस है, ट्रेजर कंपस है। तो पहले क्या होता था, ट्रेजर कंपस पे आप जैसे ही जेड दबाते थे तो आपको ये दिखाता था कि ट्रेजर किस डायरेक्शन में है, कि ट्रेजर लेफ्ट है, राइट है, ऊपर है, नीचे है, ये दिखाता था। ठीक है, तुम्हारा सब 100% है, कोई बात नहीं, जाए अभी आगे भी तो जोन आएंगे ना, आखिरी जोन थोड़ी था। जो अपडेट है ये अपडेट आगे तक चलेगी। ठीक है, तो ट्रेजर कंपस में इंप्रूवमेंट ही हुई है कि जेड दबाते ही आपको दिखाएगा जो चेस्ट की तरफ ट्रेजर कंपस बता रहा है कि ट्रेजर चेस्ट यहाँ पर है। वो मैप के ऊपर उस चेस्ट की लोकेशन मार्क करके दिखाएगा कि यहाँ पर चेस्ट पड़ी है। अब वो वहाँ पे जाके आपको देखना पड़ेगा कि वो ऊपर है या नीचे, पर आपको गेस नहीं करना पड़ेगा। और सपोज आपने जेड दबाया और आपको जो चेस्ट उसने उसने बिल्कुल बगल में दिखाई, बिल्कुल बगल में, 3-4 स्टेप्स बगल में, आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन वो 30 सेकंड्स के लिए कूल डाउन में चला जाता है। तो जैसे आप चेस्ट पिक करोगे ना, उसका कूल डाउन एंड हो जाएगा कंपस का। वो फ्लैशी लाइट से येलो वाला मतलब, देखा वुदरिंग वेव्स का डर गेंशिन को अभी कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे दे रहा है। होना चाहिए भी, कंपटीशन का डर होना बहुत बहुत जरूरी है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए सालों लगा दिए, 3 साल एग्जैक्टली, 3 साल। चलो जो भी है, लाइक दबा दो यार, 4 लोगों लाइक तो दबा दो। वुदरिंग वेव्स इज ऑल्सो कमिंग टू फोन, यस। देखो वुदरिंग वेव्स को अगर compete करना है गेंशिन के साथ, तो उनको बिल्कुल उन सारे प्लेटफॉर्म्स से compete करना होगा जिस सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गेंशिन ऑलरेडी है। तो गेंशिन अगर मोबाइल पे है तो वुदरिंग वेव्स को मोबाइल मोबाइल पे आना पड़ेगा। हाइपर वेलकम वेलकम वेलकम। 14 मिनट रह गए हैं लाइव स्ट्रीम में। 3 साल में नहीं दिया, अभी वुदरिंग वेव्स के डर से दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी गेंशिन वाले ना काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपनी पोजीशन में, जहाँ उनकी पोजीशन है ना, वहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं वो। टू वर्ल्ड्स ऑफ फ्लेम, द क्रिम्सन नाइट फेड्स, ये आर्लेकिनो की स्टोरी क्वेस्ट का टाइटल है शायद। 3 साल में बच्चा बोलना सीख जाता है, ये क्यूएल नहीं लाया गया। भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं ना, धीरे धीरे, क्योंकि ये लोग बड़े कंफर्टेबल थे। पहली बात तो कोई कंपटीशन का कोई कंपेटिटिव प्रोडक्ट मार्केट में था नहीं। इनकी हालत गेंशन वालों की वही है जैसे कि मार्केट के अंदर आईफोन की हालत है। भले ही लाख बुराइयां हों, लेकिन लोग फिर भी वहीं रहते हैं। ये चीज़ है। क्या लगता है 4.6 हिट और मिस? ये तो आर्ली किनो की स्टोरी क्वेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आर्ली किनो की स्टोरी क्वेस्ट कितना कुछ रिवील कर पाती है, लोर वाइज कितना कुछ रिवील कर पाती है। बाकी तुम्हें पता ही है, ये 4.45 से लेके जो थोड़े पैच होते हैं ना, ये थोड़ा ऐसे होते हैं। डेनस्लिफ का पैच होता है जिसमें थोड़ा सा लोगों को एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। 4.6 में क्रॉनिकल आएगा, अब ये देखने वाली बात है, ये तो अब बताएंगे क्रॉनिकल बैनर आएगा 4.6 में या नहीं। टावर ऑफ फैंसी के टाइम में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिए थे तो डर ज़रूरी है, लेकिन फिर तुम्हें पता है ना टावर ऑफ फैंटेसी का क्या हुआ। इट इज़ वेरी इजी फॉर गेम्स टू स्क्रू अप। अनोनिमस ब्रो लाइव स्ट्रीम आ गई क्या? नहीं यार, अभी 12 मिनट में। वेलकम वेलकम, 12 मिनट में ये 4.5 ही है, बस आर्ले कीनो है वही। नहीं, हो सकता है कि कुछ नया रीजन दे दें, हो सकता है कोई नई वर्ल्ड क्वेस्ट आ जाए, जैसे कि आई गेस सुमेरु में इसी टाइम के अराउंड गोल्डन स्लम्बर आया था। जहाँ तक मुझे याद है गोल्डन स्लम्बर इसी टाइम का अराउंड था, 4.3.5 3.6 में था ना गोल्डन स्लम्बर। देखते हैं गोल्डन स्लम्बर विच पैच। तो गोल्डन स्लम्बर आई थी, ए यार, अभी देखते हैं गोल्डन स्लम्बर कब आई थी।
रेमूरिया आ रहा है इसके अंदर, अनलाइकली। न्यू मैप आएगा, थोड़ा सा एक्सटेंशन आएगा मेरे ख्याल से, फॉन्टेन का ही या किसी का थोड़ा एक्सटेंशन होगा इन्हें। तो गोल्डन स्लम्बर में देखना चाहता हूँ 3.4, 3.4 के अंदर लास्ट आई थी। अब गोल्डन स्लम्बर भी बड़ी क्वेस्ट थी एक तरीके से देखा जाए, परी वाली क्वेस्ट थी 3.6 में। यस, मैं वही मैं कह रहा हूँ, कोई तो बड़ी क्वेस्ट आई जरूर थी, और परी वाली क्वेस्ट भी अच्छी थी। डेन की क्वेस्ट नहीं है, डेन की क्वेस्ट आएगी 4.7 या 8 के अंदर। अनोनिमस, थैंक यू फॉर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनोनिमस। 3.1 में गोल्डन स्लम्बर थी, लेकिन चली बहुत लंबा थी, तुम देख लो 3.6 तक थी। आर यू श्योर 3.1 में थी? बाय द वे अनोनिमस, थैंक यू वंस अगेन, आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू फॉर टेकिंग द मेंबरशिप, वेलकम टू द सीली गैंग। गोल्डन स्लम्बर वाज अनोइंग बट द एंडिंग वाज सो गुड। यस, प्लस ये जो क्वेस्ट होती है, परी की क्वेस्ट हो गई, गोल्डन स्लम्बर हो गई, ये लोर को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छी रहती है। फॉन्टेन के अंदर इकलौती वर्ल्ड क्वेस्ट जो आई है जिसने लोर में ऐड किया है वो थी नार्सिसन क्रूज, लेकिन एक से मेरे ख्याल से काम नहीं चलेगा, इनको देनी तो पड़ेंगी एक दो क्वेस्ट और। सर ड्राई पैचेस भी होना नेसेसरी है, फिर अचानक से न्यू रीजन की हाइप बूस्ट होती है, आई मीन पैसे। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। 4.7 इज टू लेट, वही फिर कुछ मिस्टीरियस कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा। डेंसली भी आएगा यार। ब्रो गुड कंटेंट, कीप इट अप, थैंक्स ब्रो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये मेरा ख्याल है कि एक वर्ल्ड को ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे कि सुमेरु के अंदर देखो, लोर को इंप्रूव करने की कितनी सारी क्वेस्ट थी। आरनारा क्वेस्ट लोर इंप्रूव, गोल्डन स्लम्बर लोर इंप्रूव, परी वाली क्वेस्ट लोर इंप्रूव। रिमूरिया पक्का है 4.6 में, अब देखते हैं। मैंने नए आर्टिफैक्ट्स का लोर पढ़ा 4.6 वाला, उन्होंने रिमूरिया और सुमेरु का कनेक्शन है। अच्छा, हो सकता है, आसपास के तो नेशंस है ये, रिमोरिया सुमेरु। अभी देखते हैं क्या आता है। 10 more minutes टू गो, 10 मिनट रह गए हैं। गाइज लाइक दबा दो, 8 लोगों 4 लाइक हैं, गलत बात, पाप लगेगा। लाइक दबा दो। कब वो दिन आएगा जब मेरी चैट भी ऐसे चलेगी जैसे ये चल रही है राइट साइड में? वो दिन कब आएगा जब मेरी चैट भी ऐसे ऐसे भागेगी? हैं? रिमूरिया एंड पेट्रिकोर एंड सुमेरु पोर्ट है 4.6 में। ओके, ब्रिजेश सोलंकी वेलकम टू द स्ट्रीम। कोड मिला क्या अभी? अरे भाई, अभी तो स्ट्रीम ही स्टार्ट नहीं हुई, 10 मिनट है अभी। रिभव वेलकम वेलकम वेलकम, एक्साइटेड यार 4.6 के पैच के लिए क्या ही एक्साइटमेंट होगी। हाँ मतलब आर्लेकिनो है, इसकी स्टोरी क्वेस्ट है, देखते हैं क्या होगा। ये बैकग्राउंड में कैट गर्ल क्या कर रही है? ये बैकग्राउंड के अंदर कैट गर्ल कुछ नहीं कर रही, ये वो चल रही है, ये टू वर्ल्ड्स ऑफ फ्लेम द क्रिम्जन नाइट फेड्स। मुझे बहुत टाइम तक ऐसा लगता है कि इनके जो ये टाइटल देते हैं ना अपनी स्टोरीज के अंदर, टू वर्ल्ड्स ऑफ फ्लेम द क्रिम्जन नाइट फेड्स, इनका कुछ खास मतलब नहीं होता, होता है क्या? कभी मैं कुछ खास मतलब निकाल नहीं पाया। मैं तो हूं ही पापी, तो करो करो, पाप मत करो। अभी भी 8 लोग हैं, 6 लाइक है, गलत बात है। द लीक्स फॉर न्यू एरिया वुड बी एडेड इन 4.6। एरिया तो नया होगा ही होगा, फाउंटेन का इनको एक्सटेंशन देना पड़ेगा क्योंकि अभी तक लोगों के स्टैचू मैक्स नहीं हुए हैं। सर इतनी फास्ट चैट चली तो सब चैट मिस ही लिखेंगे, फिर उस टाइम तो लोग खुद समझ जाएंगे ना कि इतनी फास्ट चैट तो क्या कहते हैं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। अभी अभी के हालत ऐसे हो जाते हैं भाई, अगर मेरी स्ट्रीम पर 30-40 लोग हो जाए ना, और उसमें से 15-20 भी चैट कर रहे हैं तो मैं चैट नहीं पढ़ पाता। 100 लोग बैठ गए और चैट करने लगे फिर तो हो गया काम। कर दिया लाइक, सबास एनोस वर्ल्ड गोड, वेलकम 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 वेलकम। हाँ अब 9 लोग हैं, 8 लाइक हैं। डार्क सोल वेलकम, आते ही लाइक दबा दिया करो, ये तुम्हारा सब्सक्राइबर का प्रथम धर्म यही है, लाइक दबाना। फिर तुम जैसे छोटे मोटे मॉड का क्या होगा? अरे मॉड तो मॉड ही है ना, मॉड तो नजर आता है फिर भी। क्या मतलब फ्री 5 स्टार दे रहे हैं गेंशिन वाले? देखो तुम ना चरस छोड़ो, चाय पियो। ये बहुत बुरी आदत है, ये गंदी आदत लग गई है तुमको, गांजा वांजा फूकने की। चाय वाय की आदत डालो, कॉफ़ी वॉफ़ी पियो, थोड़ा दिमाग खुलेगा। ये गेंशिन की बात हो रही है, होंका स्टार रिल की नहीं, फ्री 5 स्टार मिलेगा तुम्हें। एक्चुअली रिमूरिया का किंग दशरथ से हार के आर्कॉन वॉर में फॉन्टेन में भाग गया था, उस थ्रोन को किंग दशरथ ने क्लेम किया था। ये कहाँ से पढ़ के आ रहे हो भाई? पहले आपका कंटेंट पसंद तो आने दो। अरे हाय क्या बात है, बड़ा वो चल रहा है जी। कंटेंट वंटेंट पसंद करोगे, थोड़ा जूम कर लूँ मैं? हैं, कंटेंट पसंद करोगे फिर लाइक करोगे? अच्छा चलो ठीक है, ये बात भी सही है। आते ही दबाया हूँ, दबाने में तो हम माहिर हैं। हम्म।
इट्स गेंशिन नो HSR, एग्जैक्टली माई पॉइंट। लॉल चरस छोड़ो चाय पियो बस गुड। हाँ वही तो भाई, पता नहीं क्या फूक कर आया है। गेंशिन की लाइव स्ट्रीम में कह रहा है फ्री 5 स्टार मिलेगा। मिला है ना एक बार फ्री, कौन सा? गेंशिन में 6 स्टार मिलेगा, उसका नाम होगा द प्राइमोडियल वन, सस्टेनर ऑफ हेवनली प्रिंसिपल, 6 स्टार पहला। स्नेहल वेलकम टू द स्ट्रीम। एलॉय और क्या हो रहा है आजकल एलॉय का? एलॉय का तो मुझे समझ में नहीं आया भाई, एलॉय का तो इतना बुरा सीन है। और इमेजिन करो ये लोग आज की डेट में भी एलॉय का बर्थडे आने पर ना एलॉय के वो भेजते हैं, बर्थडे मेल्स भेजते हैं। मतलब कि आज भी उसको छोड़ नहीं रहे हैं उसका हाथ, कि कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया तो किया है भाई, अब क्या करें। मेरे को तो चाय पीने के बाद रियलाइजेशन हुआ है। फिर चाय में चरस मिला दी होगी किसी ने। चाय में चाय पत्ती मिलाओ, चरस नहीं। वो तो डेड है ना, कौन? सस्टेनर या प्राइमोडियल वन? मेल आया एलॉय के बर्थडे पे, वही कह रहा हूँ आता है। ब्रो सुमेरु कारकुन की स्टोरी ही समझ नहीं आया, किंग दशरथ वगैरह वगैरह। दोबारा से बैठ के देखो सारी की सारी स्टोरी यूट्यूब के ऊपर, समझ में आ जाएगी। मैं खुद यार स्टोरी के एक्सप्लेनेशन में ना काम नहीं कर पा रहा हूँ। सिर्फ मॉन्स्टैट की फर्स्ट जो आर्कन क्वेस्ट है उसके 2 पार्ट की वीडियो बना के रखी हुई है, थर्ड पार्ट पे काम करूंगा, फिर उसका लीवे पे जाऊंगा, है ना। प्राइमोडियल वन डेड तो है, यू नेवर नो। चरसी चाय, यस चरसी चाय वाला, ये बहुत चलेगा। CCW, चरसी चाय वाला, है ना। हमारी चाय चरस को भी फेल कर दे, ये हमारी टैगलाइन होगी मेरी चाय की दुकान की, चरसी चाय वाला। 5 मिनट्स मोर, यस। वेंटी का क्वेस्ट नंबर 2 चाहिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ वेंटी का क्वेस्ट नंबर 2 स्नेजनाया के एंड या कानरिया के स्टार्टिंग से पहले नहीं आने वाला, आई एम टेलिंग यू। नहीं आएगा। क्या कर रहे हो यार? देखो ब्रीज, अब वर्डल और स्पेलिंग भी तो होगी नहीं, अब होगा हंगामा। लाइव स्ट्रीम कोड्स तो दो, लाइव स्ट्रीम कोड्स आएंगे अभी। अभी कहाँ से लाइव स्ट्रीम कोड्स आ गए? लाइव स्ट्रीम के कोड्स बिल्कुल आएंगे। जैसे जैसे आएंगे मैं डिस्कॉर्ड पर डालना शुरू कर दूंगा। धंधा स्टार्ट होते ही बंद हो जाएगा। अरे तुम्हें पता नहीं है भाई, किसी ऐसी जगह पे खोलो ये दुकान जहाँ पे हॉस्टल कॉलेजेस वगैरह ज़्यादा हों, फिर देखो किसका धंधा बंद होता है। लगता है चाय की दुकान खोलना पड़ेगा, गेंशिन चाय वाला, फिर विंडोज़ 20 तक मेरे को भी ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे सर। हाँ, और वहाँ पर ना चाय सर्व करना पाइमॉन की पोशाक पहन के। सर कैमरा पोजीशन चेंज कर लो क्योंकि सब ट्रेलर देखेंगे। अब कैमरा पोजीशन कहाँ लगाऊं यार चेंज करके, ये बताओ। हाँ जी, किधर लगाऊं? ऊपर कर दूं यहाँ पे कोने पे? इज इट गुड? क्या कहते हो? ये ठीक है? कैमरा पोजीशन फिलहाल फुल स्क्रीन, अच्छा मैं वही कर दूं? हैं, बताओ वही कर दूं? मैं हट ही जाऊंगा यहाँ से, ये कहना चाह रहे हो? फुल स्क्रीन देखनी तो, ये रही फुल स्क्रीन। यहाँ पे मैं नजर नहीं आऊंगा, पर मेरी शक्ल होनी चाहिए ना, ताकि मैं ऐसे करता रहूं। हाँ, ओ, हाँ, हाँ। चैट के सामने रख दूं? यहाँ चैट चल रही है ये। हाँ, ये भी तुम सही कह रहे हो, ये भी तुम सत्य कह रहे हो, यहाँ रख सकता हूँ। यहाँ पे ट्रेलर नजर आएगा, और जो हमारी चैट है इसको भी उठा के फिलहाल यहाँ कर देता हूँ। अब तुम्हें ट्रेलर सामने साफ नजर आ जाएगा यहाँ से। फेक रिएक्शन, ऑनेस्ट रिएक्शन। देखो रिएक्शन तो ऑनेस्ट ही होगा, जब पहली बार देख रहा हूँ तो फेक कैसे हो सकता है? बॉटम राइट में रखो, अरे ठीक है यहाँ पे ठीक है। वैसे ही फुल स्क्रीन नहीं करने वाला, ऐसी देखनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इसको इधर F11 करके वैसे फुल स्क्रीन में लेकर आऊँगा, एस से। बस ऐसे देखो सारे के सारे, शाबाश। मैं तो जा रहा हूँ ट्विच पे देखूंगा, गद्दार अपने 29 रुपये वसूल करके जाओ, ऐसे नहीं जाना। माई ऑनेस्ट रिएक्शन टू द इन्फॉर्मेशन दैट यू जस्ट गेव मी, ब्लैंक।
यहाँ वो गिफ्ट्स काम नहीं करती ना। प्रीमियर्स इन 2 मिनट। कितने लोग हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं गेंशिन इम्पैक्ट के चैनल पे? कितने लोग देख रहे हैं? 27,777 वेटिंग। वाह। और लाइक कितने हैं? 2,000। अब ये 27,000 लोग क्या कर रहे हैं? लाइक भी नहीं कर सकते। मैं जा रहा हूँ ना, तो मैंने 29 रुपये भरे और ना साइकिल घुमाने जाना है। बाय। है देखो गाचा गेमर भी है यहाँ पे। द गाचा गेमर इज हेयर। दिस गेम लुक्स नाइस, व्हाट्स इट कॉल्ड? गाचा गेमर, शर्म कर लो। वो आप उसूल करवाओ कंसिस्टेंटली स्ट्रीम बन के। यार स्ट्रीम तो कंसिस्टेंटली हो रही है। स्ट्रीम अब कहाँ, पिछले एक हफ्ते में तो एक ही दिन छुट्टी हुई है, चल रही है स्ट्रीम तो डेली। बाय द वे मैंने आज सारी फ्रेजाइल रेजिन बचा ली, 90 फ्रेजाइल रेजिन है अब। बस बस। गाचा गेमर हूँ। अरे गाचा गेमर चैनल है यार, वो भी होंका स्टार रेल और इसके ऊपर वीडियो बनाता है। अरे हो गया, 2 मिनट हो गए। इज इट हैपनिंग? नहीं, इज इट नॉट हैपनिंग? ये गाचा क्या होवत? ये होवत जो सब कुछ ले लेवत। ये ओ होवत। अब बस रिफ्रेश मारते जाओ। एक बंदे चैट में बोल रहा है फुरीना आई लव यू। अरे फुरीना तो पुराने दिन की न्यूज़ होगी भाई। स्टार्ट? स्टार्ट कब होगी वे? ओके अब हो रही भाई, 1 मिनट में। फ्री का प्रमोशन मार दिया। फ्री का प्रमोशन? आर्कन भाई का पैसे ले लिया। किसने ले लिया मेरे पैसे? गाचा की गाचा ने। नेक्रोमेंसर वेलकम। अच्छा सर लाइव स्ट्रीम में मस्त मस्त प्लेयर चैट करते हैं। यहाँ पता नहीं कौन चैट कर रहा है। यहाँ पे लोग हो रहे हैं आर्लेकिनो लेट्स गो इट्स स्टार्टिंग, फादर 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 में लगे हुए लोग। जैसे कि गेंशिन की स्ट्रीम मैंने किसी चर्च में आया, फादर फादर करे जा रहे हैं। थोड़ी वॉइस लो कर दो मेरी। मैं तो बोलूंगा ही नहीं, मैं तो ज़्यादा बोलूंगा नहीं। मेरी आवाज़ आनी चाहिए ना, पीछे आती नहीं आवाज़ मेरी। ओके लेट्स गो। गेंशिन इम्पैक्ट के दिग्गज प्लेयर मिस्टर आर्कॉन एंड द स्ट्रीम स्टार्ट्स नाउ। It has been millennia since the fall of Remuria, and its history has long faded into the mists of mythology and superstition. Okay. Legends tell of how before the birth of Fontaine, there was an empire known as Remuria. Remurians believed their king Remus would bring eternal prosperity to the islands of the high sea. However, the god king's seers prophesized discord. The greatest empire will face the most utter destruction, and this is Fortuna. Thus did the God King derive the primordial plan from the cycle of the 7 days and winds blowing over sea and land, and composed a splendorous symphony based upon it. He believed that the polities could escape fate's judgment and attain eternal paradise if they harmonized with his perfect symphony. But today... Welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program! Let's take a look at the trailer! ये कैसी आवाज आ गई भाई? ये कैसी आवाज? On occasion, we hold barbecue dinners at the house. They hunt for food, compete with each other, even cooperate. They enjoy participating in activities like that, and the feeling is mutual. After all,
It's always possible certain familiar faces will be missing from the crowd the next time a similar event rolls around. Something has come up, and since it pertains to Cyrus and Sino, I deemed it essential to inform you all. It was a great plan, shrouded in secrecy. We all gathered around and celebrated the revival of our Lord. That's how I gained my power. The old man's been putting the pressure on me. He sent someone to tell me I'm needed for some sort of project. Project Stuja? Participating in the plan will lose a lot of members in the process. I did not anticipate we would meet again after presenting you with the Gnosis. If you accept my proposal, Monsieur Neverlet, unless absolutely necessary, I will no longer carry out any special missions within Fontaine. Transfixed! Transfixed. Everlasting as the moon! Nice. इसकी अल्ट तो वैसी लग रही है जैसे HSR की An order once कैरेक्टर given cannot be rescinded. ये कौन है? Do you have any idea what you're doing? You're hiding the very person Father has been trying to find. I really didn't mean to drag anyone else into this. If Father finds out about this, everyone involved is going to be punished. A traitor. Sino was chosen, but he was not the only one. You'd like me to return my power? I'm really looking forward to this rite of duels. The wisdom of Hermanubis would have been ours. I want you to become the next king of the house. Yet you seem to have different ideas. I'm not saying I have all the answers, but doing so will only bring us further away from being a real family. Your words paint an optimistic picture indeed. Allow me to remind you, however, few among us are willing to sip from a glass filled with tasty water. I'll make sure it's drained of all impurities and returned to its cleanest form. Good things come to children who do as they're told, so I do hope you decide to tag along. There are many dangers ahead, and I, for one, don't intend to back down. I don't want to disobey an order from Father. So why? Why have you backed us into a corner? No demonstration of loyalty shall go unrewarded, and no sacrifice shall be in vain. Impressive. Impressive. No doubt impressive. Dun, 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 dun. Hello, everyone. I'm Sarah Miller-Cruz, the voice of the female traveler Lumine. Welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program. Yay! Welcome, everyone! Yo, welcome! Okay, so I'm pretty sure that everyone would agree Trailer that was the House good, of no the doubt. Hearth isn't an ordinary orphanage. But just No in doubt case trailer you was needed good. any convincing, we've invited their voice actors to share some information और with us आर्लेकिनो today. का भी बॉस आने वाला है. everyone, my name is Erin Yvette. I'm the voice of Arlecchino, the father of the House of the Hearth. You might also recall that Child she's की the तरह. Fatui Harbinger known as the Knave. I'm so thrilled to have been invited to the special program. Yeah, hi folks, I'm Damon Mills, the voice of Linny, and he's also a member of the House of the Hearth. Yes, he is. Genshin rating. And although he's not a member of the House of the Hearth, we've also brought the Harbinger of Laughter and Cheer, the one and only voice of Arataki Ito. What up? It's me, Max Middleman. Hey everybody, what's going on? My bros, my guys, आराताकी ईतो का जो वॉइस एक्टर है, आराताकी ईतो का जो वॉइस एक्टर है, वो रियल लाइफ में भी ऐसी बात करता है जैसे ईतो बात करता है गेम के अंदर. All right, well, without any further delay, let's start introducing the new content from version 4.6. आर्लेकिनो का बॉस, yes. I've heard that travelers will be experiencing new content related to the House of the Hearth in the upcoming version. Erin, why don't you give us a rundown on what sort of organization the House of the Hearth is? Yes, it would be my pleasure. Based on the most recent intelligence reports, the House of the Hearth is a Fatui intelligence organization operated by the Knave. It takes in children who no longer have a home due to all manner of reasons, and they receive an education in a variety of disciplines. Naturally, at the same time as it provides a home, the children also take on various responsibilities. Okay, this sounds like everything that we already know from the game. Is there more news to hear?
Yes, everyone knows that the House of the Hearth is a rather complicated orphanage, and the Knave, the fourth harbinger of the Fatui, is still hiding many unsolved mysteries. Arlecchino domain incoming. Chat. अरे chat में मतलब यार पढ़नी chat में तुम्हारी. Information that we have about सब लोग वही बात तो कर रहे हैं. Let's do it. Yes, let's do अभी it. यहाँ Okay, सुनो okay. क्या बोल First, रहे हैं. I want to hear it straight from y'all. What kind of Breeze तुम्हारा live person stream do you code है think the 112. Knave is? फोन में मिलाना. Oh my gosh, I'm feeling a lot of pressure right now. This is giving me all sorts of deja vu. I guess during the Fontaine Arkhon quest, I noticed that Arlecchino was really skilled at directing the conversation. Her way of speaking was incredibly refined and polite, but she was also incredibly intimidating. I mean, remember how Farina pretended not to recognize her and talked about having nightmares? I totally get where she was coming from. But that's just an outsider's point of view, right? What is the Knave like as a parent? I think Damon is probably the best person to answer that question. इत्तो बैनर Okay, next take it patch. away. Okay, भगवान you were करे तुम्हारा hoping इत्तो that ही I would निकले. be the तुम्हारा weakest link? हर किसी के बैनर पे इत्तो निकले. Well, she's a very strict father. Okay. Uh-oh. Yeah. Strict. हाँ लो Dark Soul ने कोड दे Alright, दिया it लो. sounds like she gives everyone an intimidating impression. Yeah, but I think Arlecchino loves all of the house's children equally, and she would never treat them harshly for no reason, though the kids feel a lot of pressure during her lessons and are often scared speechless by her stern attitude. It's probably for their own good. In an organization like the Fatui, these kids actually need to be more mature, tough, and patient than other children who are their age, you know? That's actually kind of sad, though, isn't it? It is, yeah. Who hurt this knave? I want to know. Why are they this way? Okay, wait. Are you trying to say that she treats the kids like that because she was traumatized? Ooh, okay. Now that's very sharp of you, Oh, no. but let's keep Arlecchino's secrets New hidden Billet for just versus a little Arlecchino. bit Who's longer. best? New Billet. Okay. I do have a question, though. Why did the children call her father? Well, if you're curious about Arlecchino's past, then you'll have to find your answer in the game. That's fair. Her story quest, Ignis Purgatorius, will be released with version 4.6. Now, Ignis I don't want to spoil anyone's Purgatorius. gameplay experience by saying too The much Fire about of her Purgatory. quest, okay? इसकी story But quest का नाम I है. do hope that travelers will be able to appreciate Arlecchino's unique charm after they've experienced her entire story. Yeah. इसकी story quest का नाम है 4.6 will also Ignis introduce a new Purgatorius, feature, the Fire of Focused Purgatory. Experience mode. Now, if you use the feature while playing Arlecchino's story quest, then it will minimize the number of times that you'll be interrupted by characters or quest locations being allocated to other quests. So hopefully this mode will help travelers have a better story experience, you know? Nice. That's right. And in the future, this function will become available for more and more quests. Besides the story quest, I'm also looking forward to hearing the Knave's voiceover lines because Erin's kind of awesome. We'll finally be able to hear what she thinks about the other Harbingers too. Yes, I selfishly also think that will be cool. Yes. 112 कोड से कितने 5 स्टार मिलेंगे? 5 stars. Elegant yet deadly fighting style. 5 स्टार मिलेंगे GTA वाले. आज constellation नाम भी यही होगा. My eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. Transfixed. This is where you fall. इसकी अल्टीमेट का एनिमेशन स्ट्रेट आउट ऑफ होंकाई स्टार रेल है. Straight out of Honkai Star Rail. इसकी अल्टीमेट का एनिमेशन. Yeah, she's very elegant. Like that was a perfect descriptor. Like elegant but deadly. Like a ballerina of death. Yes. Everything she does is so effortless. I know, right? Yes, Genshin, the all-time best game. वही वाली 5 star. Combat abilities, then we're gonna have to talk about the Bond of Life mechanic. You might have been a victim to it while you were fighting elite Fatui operatives in Fontaine. Does anyone still remember what a Bond of Life is? Oh, are you going to be teaching us about her abilities? Guys, you're too loud. Pipe down. Sorry, let's listen to what she has to say. Wait, I think I remember. It's the red portion of the HP bar. When you have a Bond of Life active, it'll absorb any healing that your character receives. So they can't regain HP until the Bond of Life value has been healed. Yeah.
Yes, Right? very good, student. When Arlecchino has a bond of life greater than or equal to a certain percentage of her health bar, her normal, charged, and plunging attacks will be converted to pyro damage, which can't be overridden by other elemental infusions. And while she's in this state, her normal attacks will consume a portion of her current bond of life to deal more damage and reduce the remaining cooldown on her elemental skill. Whoa. Wait I a know, second. it's a lot. So you're saying that she'll deal more damage with her normal attack when her bond of life is higher? Put simply, yes. Whoa, wait a second. No, wait, I get it. Wait, so Arlecchino can give herself a bond of life, right? Yeah, I think so. I mean, otherwise she'd have to chase down enemies who can put a bond of life on her. Actually, that sounds kind of funny. I'd like to see that. भाई किट पहले मुझे समझना था To उसके her बाद एक्सप्लेन elemental होगी skill, Arlecchino's skill doesn't just damage enemies, it also applies a blood debt directive to any enemy that it hits, which will damage them periodically. And when she DOT? uses a charged attack or her elemental burst, she'll absorb nearby blood debt directives. This also allows her to obtain a bond of life based on the number of directives that she absorbed. So don't worry, Max. Oh, I was Okay. very concerned. I know you were. Okay, hold on. She can't regain HP until her bond of life is removed, right? So how does she stay in the fight? Well, after dishing out damage, Arlecchino's elemental burst will reset the cooldown of her elemental skill and heal her based on her attack and her current bond of life. Oh, okay. Also, thanks to one of her talents, while Arlecchino is in combat, she gains bonus pyro damage, but also cannot be affected by any healing effects other than the healing provided by her burst. Whoa, so मतलब कि that seems बेनेट like का she's burst जो है to herself as she is. जो बेनेट का बर्स्ट है वो इसको अटैक बूस्ट तो देगा लेकिन हील नहीं करेगा She's kind of a savage. I mean, भाई ये तो right. So इसका Arlecchino even has डैमेज a आउटपुट्स special काफी kind of ज्यादा होने move वाले हैं whenever she uses her charged attack, right? Ooh, that looks perfect for scaring her enemies. Yeah, Wow. and for putting some serious pressure on them. Yeah. हिंदी में एक्सप्लेन कर दो It's सर about time to introduce the event wishes in version 4.6. You guys ready? Let's do it. So All exciting. right. During the first phase of version 4.6, Arlecchino, the knave, and Linny will both enjoy a drop rate boost. The all-new 5-star polearm Crimson Moon Semblance will also become available. Also, the Wanderer and Baiju will return in the second phase, so be sure to keep an eye out. Yay! आई नो सर्टेन that's so समवन जो बहुत ज्यादा amazing. खुश होने वाला है Okay, so Aaron and Damon. आई नो सर्टेन समवन जो बहुत ज्यादा खुश होने वाला है कि वॉन्डर आ रहा I है do. Let's discuss the new weekly boss. बेनेट इसका बेस्ट सपोर्ट ऐसे है We were just talking, कि बेनेट इसको हील नहीं करेगा हील ये खुद से ही होगी बस सिर्फ अटैक बूस्ट देगा but in special circumstances, मिस्टर पंपम she will अरीना reveal another side. That's right. Are you ready to see a new knave? Yes! I am ready! अच्छा स्प्लैश आर्ट काफी अच्छा स्प्लैश आर्ट है ये भी मेरे ख्याल से 2 फेज में चलेगी फर्स्ट फेज सेकंड फेज वाह Wow. Not even Linny and Fremine have seen this side of her before. क्या ये कैरेक्टर 80 विशेस के बाद देने वाले हैं तुम्हें बाकी सबको जल्दी मिल जाएगा She's so elegant, but also डैम से मुझे रीटा फ्रॉम आचाई थर्ड की वाइब्स आ रही है ओके मुझे स्पाइडर के जैसे क्यों लग रही है Even more badass. क्योंकि डिजाइन इसका ऐसे ही बनाया है The badassitude. It's not so simple to see the knave's other side. She'll appear normally at first, as if she were giving you an ordinary training lesson, waiting to counter your attacks.
Yeah, it seems like she'll dodge all of our attacks like a Wow. phantom if we're out of her immediate range. Yeah, it feels like she's implying that we're all in the palm of her hand. I mean, you guys know what her personality's like. She doesn't want her children crying or running away from conflict. Instead, she hopes that they'll be able to take the initiative, even if their opponent is their own father. The outside world will not show her children mercy, so neither can she afford to be too forgiving to them. If you do not repay the blood debt directives the Knave applies to you, all her attacks against you will be enhanced. But if you manage to out-heal the Bond of Life, the Knave will reward you for repaying this blood debt, and your charged attacks against her will be enhanced. Okay. Don't the bone wings on her back look like spiders? yes, that's it. Oh my gosh. तो Like, necromancer she has वाली बात total कर दी. control of her prey while she watches them struggle and closes the distance. So basically, you'll have to out heal Creepy her being debt. the hunted one for once. Okay. I think we should Guys, stop the introduction healers finally viable होने वाले हैं गेम के अंदर. for themselves. Wait, so I know that many travelers will be wondering about this. The Knave's boss form is tied to her story quest. Normally, players would have to progress the story to a certain point in order to participate in the challenge. But now we have a quick challenge feature for weekly Trounce domain bosses. ये तो pyro new जैसे मारी. As long as travelers are adventure rank 40 or higher, इसे अबिस में डालना चाहिए. Trounce domain का boss है ना ये. तो अबिस में नहीं going आएगी. to the domains tab, selecting Trounce domains and pressing quick challenge. ये Trounce domain का boss है. Nice little shortcut to the battle. इसलिए Oh my gosh. ये I'm looking अबिस में नहीं forward to आएगी. that. That is really valuable information to have. And it also looks like it's my turn to deliver some news. 2 new artifact sets will become available in version 4.6. Fragment of Harmonic Whimsy and Unfinished Reverie. Travelers who are interested in them should stay tuned for more information. Cool. डालना चाहिए डालेंगे नहीं. Oh, you're finished. Okay, wait, how come your update was so short? It wasn't enough for me. Yeah, give us more. Okay, I actually do have other news to share. Ooh. Yes. In version 4.6, Sumeru City will be experiencing an unsolved mystery. Ooh. Okay. Ooh. For some reason, Sino's gotten mixed up in it. Hey, how did you know about that? His picture is right there. Oh, right. Oops. Well, Sino wanted to investigate personally because someone involved in the case has a very unique identity, and the 2 of them share a close connection. Sounds like there's some serious shenanigans. Sino chapter 2. That's right. Yes. Is this the case where we get to use violence if the situation gets too complicated? Yes. These are all very good guesses, but I'll offer you one clue that you probably wouldn't be able to guess otherwise. A mysterious youngster with connections to the mystery will make his debut during the case. ये तो Natlan का लग रहा है. And Sino's friends are not just freeloaders who only show up for food. Tainari, Kale, Alhaitham, and Kave will all come to support him when he's in a pinch. So yeah, if you want to know more about what happens in this case, then be sure to check out Sino's second story quest, Lupus Aureus Act 2. बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि किसी कैरेक्टर को सेकंड स्टोरी क्वेस्ट मिले. Lurking underneath the sands. पुरीना को अब तक नहीं मिली. In Imagine. due time, of course. न्यू विलेट को अब तक नहीं मिली. Imagine. Totally delivered. That was great news. और वैसे भी ड्राई पैच 4.5 था. अब मेरे ख्याल से दोबारा ड्राई पैच नहीं आने वाला. Wait. Really? Wait. Yes. Wait. What are we waiting for? We've just presented too much information too quickly. Can we take a break, please, so we can digest all of it, please? Damon. Please. He can't keep getting away I with always this. do, though. No, Damon, you're right. I know. Let's check out the first redemption code before we continue introducing Okay, the new guys, content. redemption code is here. मैं Discord में डाल रहा हूँ. Amazing. That's what I thought. मैं डाल रहा हूँ Discord में, ठीक है? WTKBMBD8ZZRZ. यार मैं भी तो गेंशिन इम्पैक्ट स्टार्ट कर दूं जरा. मैं भी तो कोड करूंगा. मुझे भी तो कोड डालने हैं हाथ के हाथ. अब 4.7 ड्राई पैच होगा.
4 महीने बाद आर्कॉन सर्जी स्वयं डिस्कॉर्ड में कोड डालेंगे। यस, डाल दिया कोड मैंने, देखना देख लो। अरे जल्दी चला गया। New area showcase. I told you the story of Arlecchino and the House of the Hearth. So why don't we continue the story of Remuria, which you saw in the beginning of the program? I would like this very much, please. Yes, you did such a good job. Encore, encore. A new area of Fontaine will open in version 4.6. Travelers will get to visit the village of Petrichor. Though, would there even be much to see on such a small island? Well, yeah, guess this is where I'm supposed to really confidently say totally, right? ये new character I think 5.1 के first patch में आएगा। Definitely more देखते to हैं। this village than meets the eye, right? Yeah, I think we're focused on the wrong thing here. This is where the kingdom of Remuria's remains lay at rest. So, how big was such a glorious and prosperous nation, really? Ooh, whale. Oh, well, now that you say that, ये बिल्ली कैसे जा रही है उड़ती हुई? looks a whole lot bigger. Now that's a neat trick. Anyway, Bubble में बिल्ली? this is where we'll meet a talking cat. With its guidance, we will be able to see the civilization that vanished thousands of years ago. What? Oh my god. Talking cat. Anything for a talking cat. As Aaron mentioned at the beginning of the program, King Remus composed a symphony, one with wondrous power that grants the wishes of the human souls dwelling within. Yes, I'm getting it. I'm getting it. I actually I don't You're get it. so not getting don't it. get That's okay. I will explain it in a few words. So you'll just have to learn about the symphony by going on an adventure with this little cat. GA map I'll क्या avoid है? spoiling the adventure itself, but you'll arrive at the Remuria ruins with the cat. Okay. The kingdom's remnants slumber in the depths where the sunlight can't reach. You'll meet a dragon in the deep seas. So you'll be able to obtain powers relating to the symphony, which will help you explore the lost realm of Remuria. You'll be able to pause the melody within the realm of this ancient civilization. You can also unseal time in places where it stopped. So these cool. powers will let you Ooh. interact with specific objects in the ruins. You know, that might be useful for solving puzzles during your adventure. Totally. Ooh. Meanwhile, a forgotten statue sits in a recess of the fated castle, silently proclaiming the immortality and glory of a great civilization. It awaits a warrior who would dare challenge the Invalid code आ रहा है, majesty अभी तुम्हारे of the सामने मैंने ancient किया है ruler. उसको। Oh yeah, that's right. Redeem. The statue of marble and brass will soon be अभी coming on as a stream redeem किया boss. मैंने उसे। You can earn all sorts of materials if you manage to beat it in a challenge. I'm so hyped for it. Me Oh too. my gosh, yes. And Damon, you did such a great job with Yes, you introducing did. it. That was great. That was Yeah. great, Damon. Wait, but real quick question. How do we even get to such a remote little island? That is a great question. Travelers who have already completed the third act of the Arkhon quest, Song of the Dragon and Freedom, will automatically unlock a teleport waypoint अभी तो बीच to the में village है। of Petrichor. Hopefully this helps travelers with exploring the new area. I've heard that this feature will return for many new areas in the future. लोग कह रहे थे यहाँ पे खानरिया है। So cool. ये तो उस जगह पे That's जो all बीच the में नया information एरिया that है। we have about Fontaine for now. And now, outside of the region, ... It seems like a new style of rock and roll is getting popular in Inazuma. Rock and roll. Yeah! अबे ये कौन सा कोड है All right, आनोस? let's all take a short break before we get into the next section. Take a look at today's second redemption code. Yeah! All right. दूसरा रिडेम्पशन कोड भी आ गया। वाह। वो तुम क्या आगे देख रहे हो क्या? तुम्हें कैसे मिल गया रिडेम्पशन कोड ये? अबे तुम्हारी स्ट्रीम आगे चल रही है क्या? ट्विच पे 2 मिनट आगे चल रहा है। अच्छा, ओ भाई आपकी स्ट्रीम पीछे चल रही है क्या? स्ट्रीम पीछे नहीं चल रही यार, मेरी तो बिल्कुल लाइव चल रही है। देखो नीचे प्रीमियर चल रहा है। हाँ, अब नया इवेंट आएगा, लाइव स्ट्रीम खत्म, क्योंकि कोड बहुत जल्दी जल्दी दे रहे हैं ये। दूसरा ये भी चीज़ है ना कि इनका क्या कहते हैं, अभी ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको एक नया एरिया दे दिया, नया बॉस दे दिया, नई स्टोरी क्वेस्ट दे दी। ये कोड ये आ गया भाई, आपका इवेंट आ गया भाई। Okay, I ओह, hear गोरो that मिल a रहा है, फ्री musical गोरो। tour
is coming to Inazuma, and the organizer is none other than Arataki Ito himself. Max, would you like to tell us more about it? It would be my absolute pleasure, compadre. So, I got a question. Does everyone still remember Dvorak? Of course. He participated in last year's Lantern Rite, right? That's right, yeah. Both Hu Tao and Shinyan performed there. That's right. And this Free Goro, time, why? it's क्या an चाहिए? epic Free tour Ito. for the ages organized by none other than Ito and Dvorak. फ्री हेसो दे सकते थे, फ्री ये दे देते. Really epic. क्या नाम है इसका? No, कुकी the way he शिनोबु. says, iridescent Arataki rockin' for life tour de force of awesomeness really gives off the feeling of rock and roll. Wow. And the theme of this concert is about life. Specifically, it's about a brave puppy who saved the lives of. अबे यहाँ पे हमारे ट्रैवलर कहाँ है? ट्रैवलर तो नजर आ ही नहीं रहा. पाइमॉन है. That's so cute. Adorable. I'm really looking forward to it. Yeah, me too. I really hope the Music Festival of Life will inspire everyone. Goro to सिस्टर से unleash already. their फिर own rock क्या and करें? roll spirit. And I'll let you in on a little secret. Ito himself will personally be performing on the big stage. What? Oh my gosh, that's gonna be awesome. Yes, it will be. And here's more exclusive news for you. Dvorak will be giving away a brand new फिर से आ musical गया ये. instrument to our travelers called the Night Wind Horn. Ooh. So if you enjoy playing music in real life, or especially if you enjoy playing music in the game, be sure to check it out. I'm looking forward to seeing more amazing performances from all the great musicians out there. Are you now? Well, since you're so excited about it and the festival, why don't सेट you मान भैया कौन सा बैनर है? तो पहला बैनर आ रहा है आर्लेकिनो और लिनिका. दूसरा बैनर आ रहा है. एक मिनट. Extreme Carnival Ensemble. पहला बैनर आ रहा है आर्लेकिनो और लिनिका और दूसरा बैनर आ रहा है वॉन्डरर और किसका? इतो का? बाइजू का. वॉन्डरर और बाइजू. Say that 3 times fast. The Trillion Trinketrol. The Trillion Trinketrol. फ्री किरारा दे सकते थे. We can't have a rockin' music festival without a rockin' venue. So, travelers will be helping Dvorak spruce it up with his list of items. It's a piece of cake, right? Yeah. And lastly, we have the Meeting of Melodies. Can't have a party without adoring fans, so we gotta invite fellow music lovers to come jam with us. After listening to their tunes, we can restore the missing music notes. Oh, so we'll be able to hear them sing. That is super exciting. Yeah. Yes, that's the point. Music gets you pumped. And after we've rocked out to the pure spirit of music awesomeness in Inazuma, over in Mondstadt, we'll be dancing to a tense and thrilling tune. Hold up. क्या फन पैच लग रहा है. सेटिस्फाइड सो फार बढ़िया है. If I say wind काफी कुछ करने के लिए आ रहा है. seekers and strategy ये दूसरा has इवेंट है. finally arrived. Yes! I love Wind Trace. Guys, Wind Trace is back. A little tense at times. Well, Wind Trace is back. That the game has undergone some mechanics changes, yeah? Yeah, you're correct. That's very intuitive of you. Thank Yeah, you. you'll be playing hide and seek as rebels and hunters, just like before, but there are a few new rules. Ooh. Yeah, when rebels are captured for the first time, they'll be exiled to the surveillance zone for a short period of time. Now, they will be automatically freed after their time out, but also their friends can try to help them escape the zone. अब ये तो डेड बाय डेलाइट बना दिया उन्होंने. ये तो डेड बाय डेलाइट का मैकेनिक है कि जनरेटर फिक्स करो, पीछे से कोई आके आपको हंटर आके पकड़ रही है तो दिक्कत है. And that's not all. Oh no, each round will have 6 signaling devices, which will prevent nearby rebels from disguising or concealing themselves. Ooh. The rebels' goal is to repair these devices while also avoiding capture. Once they repair 4 devices, they win the match. Oh, and rebels can work together to repair these devices. And hunters will either need to Dead by Daylight Genshin version. or they can simply eliminate their opponents. If you team up with friends, then watching these games should be a blast. She gets it. She gets it. But the next part is even more thrilling. Not a copy of Prop Night. When rebels are fixing a signaling device, the device being repaired will enter the high-speed signaling state. What does it mean? It means it'll give off a light visible by every player in the area. अबे ये तो यही तो Dead by Daylight के अंदर होता है. Ooh, okay. So that means that repairing the devices will expose your location. Oh my gosh. It's these sort of unexpected risks that can be the most nerve-wracking. This is going to be super interesting to play. Yeah. Oh, absolutely. And in another event, travelers will Even if receive... pull करो, wait करो. Wait कर लो अगर C0 है तो. What do you mean? तीसरा event. 3 event. What I mean is, there's a chef who's famous for using unusual ingredients, and he wants to make friends with a pyro regisvine. Huh?
Oh yeah, and not just a Pyro Regis find, Teen he also event. wants to befriend a Primo Geovician, and a Jade Plume Terror Shroom, and the Millennial Pearl Seahorse. You guys heard me the first time. Yeah, I thought you would react this way. Anyway, a chef recently returned from a trip to Natlon, and he started getting some ideas. He thought he should toughen himself up by having his own companion. You know, just like how people from Natlon have Saurian companions. पहली बार कोई NPC इतना खुल के नेटलैंड के बारे में बात कर रहा है. Wait, did you say that he came back from Natlon? Listen, Damon. If you want to know the details, go check out the event when the version is live, all right? But for now, it's time for me to introduce the game club. Okay, all right. Okay. We hear you. All right, you got it. You got it. In this challenge, you can adjust the difficulty and your negotiation strategies. If you've got the guts, then you can take on Fearless difficulty. You can also talk to Ranjit to adjust the number of negotiation strategies. So if you reduce them, it amps up the challenge difficulty, giving you the perfect opportunity to test your skills. Cool. Both active strategies and long-term strategies are available. You can trigger active strategies at will. However, your opponent's HP and level will change depending on the number of strategies that you've picked. That's cool. So you've got to choose your favorite strategies to come out on top. Play to your strengths. Wow. Noted. And moving on, travelers should be familiar with our next event, Vibro Crystal event total मतलब. Ooh, it seems like the event involves connecting different vibrating crystals in order to generate different effects. Aaron, I am so impressed by how intuitive you are. Oh my gosh. Twitch पे देखो बहुत सारे delay है. अरे छोड़ो यार कोई बात. Yeah, well, I meant it. Each round requires 2 teams. Before each battle, you can set up Vibro Crystal Harmonics plans for each of your teams. This will allow you to receive different combat buffs when you combine transmitter crystals and receiver crystals. Basically, the transmitter crystal decides the trigger condition, while the receiver crystal determines the buff that your team gets as a result. By connecting them in different combinations, you can create varying harmonic effects. It's your custom buff plan. Wow. Spot on, Sarah Miller Cruz. Thank you. And you gain a harmonic point for each time that you trigger a harmonic effect. You can get even more combat bonuses if you accumulate enough harmonic points. Each challenge will have different trial characters, so you can choose the harmonic buff that works best for your team setup. Nice. Be sure to maximize your points if you want to exchange them for rewards. Nice. Also, the Genius Invocation TCG event, मैं the तो भूल ही गया था ये भी Fourth exist September, करता है. will be returning in version 4.6. The heated battle mode will also receive an update, so don't miss out, duelists. And there's going to be an overflowing mastery event, so you can more easily train up the characters who need the extra boosty boost. Oh my gosh, thank you so much, Max. You just did an amazing job. That was impressive. Thank you, introducing all Sarah. that. Oh, thanks, And guys. Use since you Chi-Chi. introduced so many events Kahe? in one go, I feel like you deserve a little break. You know what? Yes, you agree? I was gonna say, I agree. too. I agree. So how about now, let's check out the last redemption code. इस गेम में TCG भी है. Yes. 9B3AMTC QZYQ9 भेज दिया भाई. ले लो. Account, redeem now, paste, exchange, confirm. $381 आ गया यार. 381 पुल करें. ओह, मेरे को लगा इतनी अच्छी किस्मत. चलो कोई बात नहीं. Welcome back, everyone. System optimizations, Next okay. up, we're presenting some information about improvements for different in-game systems. Nice.
First up, we have some न्यू आर्टिफैक्ट का updates 2 for the पीस क्या है Quest अभी नहीं पता है Hub, लगा. such as the quick obtain feature. Instead of having to navigate a bunch of menus, you can use this feature to put all missing furnishings into a queue, where you can use one click to purchase any missing components and then craft your desired piece. Okay. Ooh, that does. भैया गाने का स्टैंडर्ड से वो निकालने का 5 पेटी पे C1 डीलुक निकल गया. क्या Avatar बात है. system will also be updated, so you'll be able to use more portraits of your familiar friends as your profile display. Nice. Oh, that's fun. Oh, that mask is Hanachiru Sato, isn't it? Mm-hmm. Oh, and there's Arama and the Thunderbird and Rue, and more. This is amazing. So many more. I'm sure lots of travelers like them. Treasure compasses have also been updated. Its markers will be displayed on both the large map and ये the सबसे mini बेस्ट लगा map. मुझे. The compasses will also include information about different map layers. सबसे बेस्ट लगा है मेरे को ये. More intuitive. It's time to eradicate all the maps with 99% exploration progress. Heck yeah! Exploration! Eradication! Yes! Now that we've gone over some updates to the game systems, it's time to talk about some Genshin Impact soundtrack news. Let's go music! Yeah, that's right. Genshin Impact's third Fontaine OST, Cantus Aeternus, will debut during version 4.6. New This way to album flex features Quest. Original music created by the Hoyo Mix team for the new region of Fontaine and related content. Yes! Music is my favorite! So hyped. Done. Oh no, y'all! It looks like there's nothing left for us to present. Done. I know. So I think that means it's time for this special program to come to a close. Say it's not Ooh. so. Is there anything else that y'all would like to share with all the travelers who are watching? Yes. What? We need to have an answer right now in this moment? It's okay. You've got now. this. You got this. Okay, I'll make go. it easy and just be very selfish and say that I'm just so incredibly excited for Arlecchino. Chronicle Wish के बारे में कोई बात नहीं की इन्होंने. We did a lot of work with her. I think she's really Nothing cool, about and I can't Chronicle wait for Wish. Everyone else to see how cool she is. She's so cool. She's so freaking cool, and I love the whole quest and everything secret that I can't talk about right now. Dev का discussion पढ़ लिया. I'm also really excited for that and Linny's involvement in said things, and that's इन्होंने बता ही all दिया. I'm gonna say right now, guys. हसनैन गेमिंग बैनर में कौन कौन से कैरेक्टर हैं? तो बैनर के अंदर आ रहा है आर्लेकिनो लिनी फर्स्ट फेज के अंदर. सेकंड फेज के अंदर आ रही है हमारे वॉन्डरर और बाइजू. And all I can say is that I had more fun recording for this. हाउ मेनी कोड्स प्रोवाइड? 3 कोड्स हैं. मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर गेंशिन HSR कोड वाले चैनल में 3 कोड डाल दिए हैं सेपरेट, तो कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो वहां से. Wow, I'm excited for all of those things too, and I'm also 4 स्टार कौन कौन से ये नहीं pumped पता अभी. for the Wind Trace Festival because I love it so much. 8 out of 10 And फेलियर होगा. also क्रॉनिकल there's बैनर आया ही नहीं. of awesome things coming दोबारा ही in नहीं आया. version 4.6, so I hope everyone's excited. Yes, I am. Yay! Wow, okay. I just have to say this was so fun being here with you today. I'm so glad I got to चलो do guys. this. This was such a great time. ये हो गया. अब बेसिकली क्या है कि पैच कैसा है कैसा नहीं है इसका डिस्कशन तो अब होगा कल. ठीक है देवियों सज्जनों, इसका डिस्कशन अब कल होगा स्ट्रीम के ऊपर. अभी तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि अभी जा रहे हैं अपन. एक मिनट इस चैट को दोबारा से यहाँ लगाऊं. हाँ तो डिस्कशन खैर अभी तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कल करेंगे डिस्कशन स्ट्रीम के ऊपर. ठीक है चलो गाइज, कोड कॉपी करो, अपने प्रीमोज रिमोज इकट्ठे करो. और मुझे मेरा होंकाई स्टार रेल में एक्सप्रेस पास मिल गया है, तो आई होप मेरा अब जो लाइट कोन है एक्रोन का निकल जाए. नहीं निकला तो आई विल बी ए सैड पर्सन. चलो ओके गाइज, टेक केयर. कल मिलते हैं स्ट्रीम पे. ठीक है जी, बाय.